So, good morning, all of you. Anyone have queries? Yes, anyone have query? Okay. So today we have to start with the concept of Android. Okay. Samir, for what purpose you want to know? Yes, Samir. Samir, that is maybe because of your system, not the configuration. It's also because which software you have installed and how your system is working. 8 GB is sufficient for your Android Studio. 8 GB is sufficient for the working with Android Studio. Remaining people getting my voice? Okay. Silence, you can check your system, either your internet connection. Maybe that's the problem from your side. So now we have to start with the concept of Android today. And for the starting with the Android,
firstly we need to understand some concept regarding Android. यानी अगर हमें एंड्रॉयड सीखना है तो एंड्रॉयड के बारे में कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए. And that's why we are going to understand that concept. And that's why we are going to understand that concept, and then we can move on the concept of Android Studio. Got it, everyone? Now, admit this. So, what we have to understand the first thing. So, basically, we all know that why we have to use the Android and why we have to learn. So, we can say in current scenario, approximately more than 80% market captured by Android itself. Yeah, you can say if nowadays 100 phone is sold, in out of 100, approximately 80 to 85 phone be sold by the Android devices. यानी जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं एंड्रॉइड में कितनी होती हैं 80 to 85 डिवाइसेस होती हैं जो सोल्ड होती हैं फॉर एंड्रॉइड. Got it? तो यहाँ पे हमारे पास क्या पता है कि आज की डेट में आई थिंक आउट ऑफ 100 approximately 80 to 85 people are using the Android devices. Now question come in the mind, then what the purpose? How we can do the work? Question आता है why that is so much popular? The reason behind it's a lot of user experience. There's a lot of customization, as well as Android is a open source also. Anyone can, any company can join the OHA, and any company can use the Android. Like that, अगर हम iPhone develop करना चाहें तो iPhone you cannot develop directly because that's a product of Apple. And for if you want to develop this, only one company is going to be developed, that is the iPhone. And that company is what? No. So for that purpose, we have to move on some concept. कैसे काम करना है? So for that purpose, so this one. And now we have to import this. We have to. Now, firstly, we have to discuss about the concept of Android overview. We have to discuss about the Android overview, the Android auto and physiology. So for that purpose, we have to study the concept of this one. Now, so there's the first thing is an OHA. Which concept we have to discuss? OHA. That is stand for the Open Handset Alliance Project. यानी जो हमारा Android है, that is what? It's the Open Handset Alliance Project. That is a Open Handset Alliance Project. Now you come in the mind, what is the Android? The first thing. Always come in the mind, what is the Android? So basically we can say Android is a software platform from Google for mobile devices that include an operating system, middleware, and key application. Android क्या है? What is Android? Android is a software platform from Google for mobile devices
That includes an operating system, middleware, and key application. Key application means the application or app you are using. That is the concept which is known as the key application. That thing is known as the concept of a key application. Now, similarly, when we're working with the Android, what is the already I told you, Android is a software platform from Google. एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे. Initially, that is not a product of Google. The Android है, that is not the initial project of Google. बोलो रे, अभी तक 1 रुपया किराया हमने ले लिया, 1 रुपया कुछ नहीं के लिए किया अंदर तो अच्छा. So Android is a software platform that is provided by the Android itself. So that is developed by Google, but initially that is not a product of Android. So the question come in the mind, then who developed Android at the initially? So basically, I can just tell you later on. But before that, this is some more concept we have to understand. Mobile application development. Now, if you want to develop any application, mobile application development is the process by which application software is developed for low power handheld devices such as personal digital assistant, enterprise digital assistant or mobile. यानी अगर हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी है, then we can use the concept of Android. Now, for that purpose, if you remember that, now this I hope you all are aware about that. You can also purchase the Android devices like that, a clock, a band, wristband. वहाँ पे भी क्या होता है? There is some coding is also there. How we can manage this concept? How we can manage that is important. देखो उसके पीछे 2-3 लॉजिक्स होते हैं. How we can do the coding and all. Basically, आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं where we can do the working on this. Nowadays, a TV is also available of Android TV. You can see a lot of companies making the Android TV as well. Now, that we can say concept of mobile application development. Now, it's a little history about the concept of Android. So basically, Google, a software platform from Google and Open Handset Alliance. Okay. Basically, there's a one organization that name is Android Incorporation. What is the name of the organization? Android Incorporation. That is the one startup in 2003. कब काम हो रहा था? In 2003. And the person name of that company is Andy Rubin. The person name is what? Andy Rubin is starting the work on the Android. So now what happens in 2005, Google purchased that startup, and then when it will be purchased, when the Google is purchased, it will form a one organization. That name is Open Handset Alliance. It's a consortium of several hardware, software, as well as telecommunication companies. Understand the point like this? If you want to, your device will be successful in the market, so it will require the 3 things that will be work. The first thing is the hardware, second thing is the software, and third thing, are your phone is capable to give the things to your networks also. यानी जो हमारे नेटवर्क्स हैं, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, क्या उनके लिए प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं? दैट्स मैटर. और अगर इनमें से एक भी जगह ये चीजें फेल होती हैं, तो आप कह नहीं सकते कि हमारा डिवाइस परफेक्ट है. वी कैन नॉट से द डिवाइस इज परफेक्ट. So now, July 2005, Google acquired which organization? Android Incorporation. So we can say from 2005 onwards, now Google become a product of this company. Sorry, Android has become a product of this company, that's the Google itself. Now, November 2007, Open Handset Alliance formed a consortium of 86 hardware,
software and telecommunication companies. They were to advancing open standard for mobile devices. And nowadays, you know that there's a lot of companies also a part of this. So now, October 2008, the first Android devices available. Sorry, in basically there's a open source, and you can say December 2008, a 14 new members joined the Android project. Android का जो पहला फोन आया था that will come in the market in 2008, and that is released by the HTC, and that phone name is HTC Dream. That phone name is HTC Dream. Now, so when you talk about the key, what is the OSA? So basically this is a version. So basically जो हमारा फर्स्ट वर्जन था जिसे हम 1.0 बोलते हैं, जो 1.0 एंड 1.2, तो बेसिकली उन्हें नाम कुछ दिया ही नहीं गया. दैट इज वी कैन नॉट गिव एनी नेम, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट अ वन नेम दैट इज 1.5, एंड दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट इज कपकेक. यानी उन्हें हमने कहा गया अल्फा और बीटा. दैट इज व्हाट वी कैन से अल्फा एंड बीटा. नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ cupcake, then we have a donut, we have a eclair, we have a froyo, we have a gingerbread, or the gingerbread is one of the favorite version of Android itself at that some time. यानी जो हमारा gingerbread था वो एक टाइम पे Android का स्टेबल या फेमस वर्जन माना जाता था. Okay, then we can get a honeycomb. We can get is what? Honeycomb. Honeycomb is basically work. Honeycomb के बारे में एक चीज जानना ना, honeycomb is only come for the tablet. It will not never come for the Android devices. जो हमारा honeycomb था वो कभी भी Android devices के लिए आया ही नहीं था. That's make for the only for tablets. Okay. Then we have a concept of Android 4.0 to 4.2. That is the ice cream sandwich. Okay. Then हमारे पास आया Jelly Bean. Jelly Bean था 4.1 to 4.3. That is known as the Jelly Bean. Then 4.4 to 4.4 is your Kit Kat. जो हमारा 4.4 था वो क्या था? हमारा Kit Kat था. Then we have after this a Lollipop, that is a 5.0. Then after that we have a 6.0, that is your Marshmallow. Then we have a 7, that is your Nugget. We have a 8, that is Oreo. We have a 9, 5, and then we have a 10, that is a Q. And from Q onward, there's a no naming convention. Okay, so means we have a some kind of thing जिसके बिहाफ पे हमें आगे काम करना होता है. ठीक है ना? These are the version basically. So now currently Q is available. Now Open Handset Alliance, that is a Open Handset Alliance is a consortium of several technologies companies, including hardware manufacturers, mobile carriers, and software developers. मोबाइल कैरियर इन द सेंस जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, like that Vodafone, like that AT&T, like that Virgin Mobile, like that Airtel. These are the also companies that is a concept is what they are providing you the mobile carrier, that is they are providing the feature. A commitment to open a shared vision for the future and concentrate plan to make a vision of reality. To accelerate innovation in mobile and offer consumers a richer, less expensive and better mobile experience. So for that purpose, they have formed the OHA. What is the purpose of this? So basically what happens, we know that firstly we have a 2G concept, then we can get a 3G, and then we can get the 4G, and now we are working on a which concept? Now the 5G in the market. So what you can see, आप इनमें से कोई भी चीज यूज करते हो तो you can feel that कि data consumption is now going to be
heavier. जो data consumption से वो क्या होता गया, बढ़ता गया. And when you're processing the data, always your phone get heat up a lot. That means ये मोबाइल कैरियर्स बताते हैं कि how much things you require to handle when you're doing this kind of thing. So that side we can say we can work on that particular concept. Now Open Handset Alliance OHA. So you can see there's a lot of companies. Maybe you all either listen, either you have know that. ठीक है ना, जैसे गूगल, Symphony, ARM, Vodafone, Intel, Nvidia, TAT, Texas Instrumentations, Omron, Broadcom, LG, Huawei, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, and so many. So what's the purpose of this? You can do anything. This is basically a company that we the part of OHA. OHA stands for the Open Handset Alliance. Now, after this, we have another platforms also. After this, we have another platform also. A technology that is Android, Java, but portion of code can be written in C and C++ also. Yani, this is one platform that is Android that we are going to learn. So that is what Freya Kim said. Programming language कौन सी use की गई? Java, but portion of code is written in C and C++ also. And that is what is your Linux kernel. हम उसे क्या बोलते हैं? That is another concept of Linux kernel. कि हमारा जो Linux kernel होता है वो किसमें लिखा गया है? That will be written in form of a that is in form of a Linux kernel. Okay. Now then we have another feature technology that is your Appception. So Appception can use the concept of HTML, CSS and JSS. JavaScript जिसे हम क्या बोलते हैं? That is JavaScript. So that is also used for the platform for which type of application we can make Android as well as iOS. And with the help of Appception, we can create a different kind of applications also. Then we have a concept of BlackBerry. BlackBerry is a one phone that is a purely Java based. And if you develop this, you can only use the BlackBerry only. Then we have Aqua, C, C++ and JavaScript. Again, it's a work with everyone, Android, BlackBerry and iOS for all. Then we have a iOS SDK. iOS SDK that is used for the Objective-C. That is used with the concept of Objective-C. So Objective-C can be used in iPhone, iPad and iPod. After this, we have a Palm OS, that is C, C++, Pascal. That's a Windows phone with a style tab. Then we have a Symbian. If you remember the Symbian, ये वो कॉन्सेप्ट था जिसकी हेल्प से एक टाइम पे Nokia is also capturing approximately 60-70% of market. ठीक है ना? And then we have a Windows Mobile, that is C, C++ as well as mobile phone. So now these are basically other platforms, but we have not to focus a lot of them. We have to only focus on two things, that is Android. From this place, we have to start the concept. From this place, we have to start the concept. How we can do the working and how we can start the concept. So now this is the architecture of Android. The core model of that is what? A Linux kernel. The core concept is what there? A Linux kernel. After this, we have a concept of native libraries. In native libraries, that is every kind of other libraries are there. Then we have a runtime plus Dalvik virtual machine.
That is also known as the Dalvik executable. हम Dalvik virtual machine को क्या बोलते हैं? That is known as the Dalvik executable. Or you can say a DEX file. Then we have a Android framework, and then we have a Android. That's it. So we have this kind of things. यानी हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं जिनके यहाँ पे हमें कोई काम work करना है. We have to do the work. Now we can move on this. Now, so firstly, what we have to see, we can discuss on the concept of Linux. So when you're discussing of the Linux, there is a one thing, and that thing is important. Work as HAL. Work as HAL. HAL stands for that hardware abstract layer. HAL stands for the hardware abstract layer. That means it will be work with the concept of hardware abstract layer, and then we have a device driver there. In your Linux kernel hold the information about the device driver. Then third point is memory management. We have a concept of process management as well as networking. Means all these things you can get inside of which portion? Inside the Linux kernel. Inside the Linux kernel. So now if you see there's a concept is display driver, camera driver, flash memory driver, keypad driver, Wi-Fi driver, audio driver, power manager, and one of the most important thing is binder IPC driver. IPC basically stands for inter-process communication. IPC basically stands for the inter-process communication. That is considered what? Inter-process communication. So now question from that, what is the meaning of inter-process communication? So that is always used when we are working on a which concept? When we are working on a concept where we can say we want to interact with other applications. We want to interact with other applications, then we can use the concept of inter-process communication. Got it? So for that purpose, we can move on that. Now, Linux kernel is something like this. Now, second thing is your library. Second thing is what? A library. So basically, we can get the library through the C and C++. यानी जो हमें libraries मिलती है किसके थ्रू मिलती हैं? That we can get with the help of C and C++. Interfaces मिलते हैं. We can get an interface through the Java. We have a Surface Manager that can handle the UI windows, and we have a concept of 2D and 3D graphics, as well as we have a media codec, SQLite, and browser engine. In all these libraries you can get on a which section? In library section. तो यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी देखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं, दैट इज व्हाट? सरफेस मैनेजर, मीडिया फ्रेमवर्क, SQLite, OpenGL, FreeType, WebKit, SGL, SSL और libc. So these are basically a libraries. एक चीज ध्यान रखना है सबको, जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर होता है वो होता है एंड्रॉयड में WebKit ब्राउजर. कौन सा होता है? The default browser is what? A WebKit browser. The default browser is what? A WebKit browser. Got it? WebKit is your default browser. Then SSL stands for Secure Socket Layer. libc stands for the library through C. OpenGL is used for
2D and 3D graphics. Free type is a framework and so many. That is the work of your library section. After that, the library, we have a third concept, that is Android runtime. Now they, if it will be asked that हम इस ब्लॉक को कहते हैं ART. That is known as the concept of now ART. ART is basically stand for the Android runtime. Android इसको हम क्या बोलते हैं? That is known as the concept is what? Android runtime. So basically what happens? Like that Java में आपको Java में क्या मिलता है? JVM. That is stand for the Java Virtual Machine. और यहाँ पे मिलता है Dalvik VM. That means Dalvik Virtual Machine. So now question that what is the difference on that? That I can just tell you. उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि why we can say Dalvik is important there. So when you work concept, you're working on this concept or Dalvik. So when you're generating something like this is your source file. This is your Java file. Okay, and then this file will be, this is a class will be converted from a class file and then be sent to the Dalvik executable. Got it? So how we can say it's a .java file. जैसे can say source code. और इसे हम बोलते हैं सब बाइट कोड. And now that is converted from a text file. यानी कभी भी डायरेक्टली प्रोसेस नहीं किया जाएगा. इसके लिए क्या किया जाएगा? इसे भेजा जाएगा डेल्विक VM के पास, यानी डेल्विक एग्जीक्यूटेबल के पास, और ये उसे कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ DX फाइल. दैट इज फॉर द डेल्विक executable, and then this file is going to be executed. Clear, everyone? So now what the things we have to focus कि we cannot do this work basically. तो यहाँ पे क्या होता है कि by source code is will be converted from bytecode. Take the screenshot at yourself, okay, and then we can convert that in form of text file. Text is basically a Dalvik executable. और हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो समझने के लिए यहाँ पे the point is also written कि why we have to do the concept of this. So for that purpose we can understand this. When we're working on the Dalvik executable, it's a compact and efficient than the class file. यानी ये class file से भी क्या होगी? Compact होगी. क्यों? क्योंकि इसे compress किया जाता है. Second thing is a limited memory and battery power. ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमें पता है हमारे फोन में we have a limited memory and battery. That's why we require to focus on this concept. Now, which library we have to use? The core Java library, Java 5 standard edition, and collection IO etc. Why we require to use this? So for that purpose, we require just because all we need to time. That's why we have to do this work. Okay. So now there's a 5th edition because in 2003, that is the first time is what a JDK 1.5 is working. And that's why the minimum library is your 1.5. But currently we can use 1.8 above, but we cannot use the JDK 9.
but we cannot use the JDK 9. Now there's an application framework. Means a framework where all the application will be work. तो अगर आप यहाँ देखोगे API interfaces, we can get all the API interfaces in this section. Activity manager manage application life cycle. तो application framework के अंदर आपको कुछ चीजें मिलती हैं. That is what activity manager. यानी first thing is what activity manager. Second is a window manager that manage your windows. Then we have a content provider. And this is one of the most important thing in Android system. With the help of content provider, we can share your data across the application. With the help of content provider, we can share the data with across the application. That is the concept of content provider. We cannot share the data directly in Android. Then we have a concept of view system. We have a concept of package manager. We have a concept of telephony manager. So everything event happen related to the telephony that is managed by the telephony. Like that, you are getting a call that is just managed by telephony manager. You're getting the SMS that is managed by the telephony manager. So that's a lot of things is there that can be managed by the telephony manager. Then we have a concept of resource manager. Okay. We have a resource manager, location manager, and notification manager. The location manager can manage the location, information, and notification manage the things that how we have to generate the notification to you. So now we have to move for the last concept. That is what we have to discuss now. This one. Application. In this level we are going to work. हम यहीं पे काम करते हैं. यानी built in and user apps can replace built in app. तो यहाँ पे हमें अपना काम करना है. तो जैसे हम देखते हैं ना, जब आपको एक फ्रेश फोन आता है उसके अंदर यही सारी इंफॉर्मेशन होती है, होम, कॉन्टैक्ट, फोन, ब्राउजर्स एंड ऑल. So we have to basically work out that particular process. So now there's any queries? Yes, anyone have queries? No. Okay. So after this, development required is what? These are the optional things जिस पे हमें focus नहीं करना है, because we have to discuss about this concept. We have to discuss with the concept of Android. So now the second thing we have to discuss, and that is your, that's again not required. This is the things we are going to understand now. This is one of the most important thing, and you must need to aware about that. Take the copy and pen, either take the snapshot when you feel that this is not going to be clear. Remember, then you have to take the snapshot. Okay. The point we have to understand the concept is Android building fundamentals. You can say Android application fundamental, as well as you can say Android building blocks. That point we are going to understand. So basically what the point we have to understand, we can start with the concept of simple activity.
So we have to discuss a concept regarding the application fundamentals. The main point is how we can work on Android. So first point that you must need to aware about that application are written in the Java programming language. Application are written in the Java programming language. Now there is a support of Android also, so you can use anyone, that's your choice. But we are going to learn about which concept? Android, and with the help of Java programming. So now compile into an Android package file that is known as for APK. Each application run in its own sandbox and Linux process. Each application run in its own sandbox and Linux process. So बहुत से लोगों में क्वेश्चन आ रहा होगा, what is the meaning of sandbox? As well as what is the meaning of Linux process? So basically what happened, can I explain you? When we're talking about the concept of Linux process and sandbox, basically that's the concept. When you are working on a Windows, basically what happens, there's only one sandbox. It's a trusted or untrusted application. Both are executed in the same container. But Linux can make some changes. Linux say that if that is the application that trusted, then it will be executed in one block, and if that is not trusted, then it will be executed in another block. So हमें पता है always you can get a harm from the untrusted also more as compared to a trusted application, and that's why we have a concept of there is a trusted and untrusted block जिसे हम बोलते हैं sandbox. So यानी Linux can create two sandbox, one for trusted application and one for untrusted application. But Android do the different work. Android say how many applications are there. They each can get its own Linux process as well as its own sandbox. So that's what happens in Android. No one application can interact with other application directly. इसीलिए क्या होता है कि एंड्रॉयड के अंदर अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है तो यू कैन नॉट डू दिस वर्क, आप ये काम नहीं कर सकते. अगर आपको ये काम करना है तो यू कैन डू दिस वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ आईपीसी. इसके थ्रू में करना होगा विद द हेल्प ऑफ आईपीसी. आईपीसी स्टैंड फॉर द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. आईपीसी स्टैंड फॉर द इंटर प्रोसेस communication. Clear everyone? Sandbox means इसका एग्जांपल ऐसा हो सकते हो निगाह रखा है क्या से, ठीक है ना, कि जैसे एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं सपोज दैट, और अगर उसमें से एक ने भी इंटरप्शन स्टार्ट किया तो क्या होगा? In your class there's a 60 student. If one student start the interruption, so what happens? Means entire batch get disturbed. ठीक है ना, entire batch get the disturbance. So now it will affect everyone. Got it? But अगर हम थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्क कर दें, अब हमने क्या किया, हमने हर स्टूडेंट को अपना अपना मेमोरी ब्लॉक दे दिया, यानी सबको एक एक बॉक्स में रख दिया, तो क्या होगा? क्या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है या वो डिस्टर्ब कर सकता है? नो. तो यहीं पे हमारा एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म और आता है, इसी को हम एक और सिक्योरिटी मैकेनिज्म बोलते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सैंडबॉक्स प्ले वाइटल रोल. देखो एंड्रॉइड में कोई वायरसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान रखना. एंड्रॉइड में ऐसा नहीं किया कि फोन में वायरस आ गया समथिंग लाइक दैट.
अगर वायरस आएगा भी तो वो उसी एप्लीकेशन के लिए होगा जिसके लिए उसने आपको वर्क किया है। तो डिफरेंस क्या होता है वो समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर वर्किंग, आपके फोन में मॉलवेयर्स होते हैं बेसिकली, जो आपके फोन जो होता है अननेसेसरी या अनवांटेड ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, जो आपके इंफॉर्मेशन को किसी एनोनिमस सर्वर्स पे क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कहाँ पे सेंड करते हैं, एनोनिमस सर्वर पे। तो बेसिकली सिर्फ एक फॉल्ट यही होती है, ठीक है ना, बिकॉज कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और भेजी जा रही हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वायरस। गॉट इट? तो इसीलिए क्या होता है, समटाइम योर बैटरी कैन गेट रिवर्स व्हेन द malware is there. So they can do the work is what? They are sending your information anonymously at any other server. That is a concept. So sandbox means every application gets its own sandbox as well as a Linux process. आप अगर 5 एप्लीकेशन है तो उनको पांचों को अलग अलग सैंडबॉक्स दिया जाएगा एज वेल एज एक लिनक्स प्रोसेस एलोकेट होगी। सो अकॉर्डिंगली दे कैन वर्क, अकॉर्डिंगली दे कैन वर्क। तो यहाँ पे कौन सा जो सैंडबॉक्स का होता है वो किसके लिए होता है, फॉर द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन? Okay. Now there's a next file. Applications consist of component, a manifest file and resources. There's a no concept of Android viruses in Android basically, because every application runs its own sandbox. What the problem is, there's only problem with that maybe you are getting the malware and all type of attacks. They are sending your information back to the any anonymous servers, जो कहीं आपके anonymous server पे आपकी information क्या कर रहा है, भेज। That is the only problem with the Android. Otherwise there is no problem. ऐसा नहीं होता है अगर आप, और बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आपको तब आती हैं when you can install the application from unwanted place. अगर आप गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करते हो, कहीं और से करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है नेवर इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन फ्रॉम आउटसाइड द रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज हैं उनके बिहाइंड कहीं और से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर एवरीवन? So now we can move now our next concept. Now, so basically application consists of component, so for that purpose we can start with the concept is now, which concept? Application consists of components, a manifest file and resources. So what the components is there? The first thing is the activities, second is services, third is the content provider, and fourth is broadcast receiver. Fourth thing is what? A broadcast receiver. देखो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उन एप्लीकेशन के अंदर यही सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एक्टिविटी, सेकंड थिंग इज व्हाट? अ सर्विसेज, फोर्थ थिंग इज व्हाट? अ कंटेंट प्रोवाइडर, and fifth thing is a broadcast receiver. Then what is the thing is here? A broadcast receiver. Broadcast receiver can do the working that we can discuss later on. Okay, so this is basically a application fundamental. देखो ये हुआ सिर्फ consist of component. These are the components.
अगर आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखा था, आई कैन शो यू द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये होती है हमारी मैनिफेस्ट फाइल। और इसके अलावा मैंने हम लोगों ने जब एंड्रॉयड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? स्टैटिक नेस्टेड क्लास। So at that time we can discuss about the concept of there's a one file that name is r.java. That name is what? r.java. उसे हम बोलते हैं रिसोर्स फाइल। उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। How this is going to be worked, that we are going to understand. Now, firstly we have to discuss about the concept of activities. What we can discuss are activities. So now the question is that an activity represents a single screen with user interface. The first point you need to understand. Activity represent a single screen with user interface. यानी activity क्या होती है? एक representation है single screen की, इसके अंदर user interface होंगे. There's a button, there's a text view and so many things. Most applications contain more than one activity. You can say most application contain a multiple activity. जो हम पर ज्यादातर applications होते हैं क्या होते हैं? They will contain the multiple activities. Now there is also concept of when a new activity status is displayed, it is disposed on the backstack. देखो जैसे होता है ना कि आप एक application open करते हो, when you open the one application, the second activity go in a So we are discussing that when we're talking about the concept of activity, what the things we need to manage. The first one we can say, when a new activity start. देखो basically हम लोगों ने कहा पहला जो fourth point है, user interface can be built with Java, XML or in Java. यानी जो हम लेआउट्स बनाएंगे वो सारा हम किसके हेल्प से बनाते हैं?
that we can make with the help of either XML, either we can use the Java class. Now, monitor lifespan to call back methods like onStart, onPause and so on. यानी हमारे पास बहुत सारे कॉल स्टैक के फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हैं, जिनमें हमारे फंक्शंस होते हैं on start, on pause, on resume and so many. So that with the help of that we can monitor our lifespan. We can monitor our lifespan. That is basically a concept. So now we can discuss some more concepts also there. So after this, the first thing I want to told to all of you, okay, there is only one thing you can send, that is your queries, nothing, any kind of discussion. Got it, everyone? No one can do any kind of further discussion. If you have any queries, that you can ask. Okay, everyone? Mrityunjay and Vivek. Basically, lifespan, Kishan, is what? Nigar, that we can discuss when you are working on any activity, then you are able to discuss about that. ठीक है ना? जिससे सिंपल ऐसा समझ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाते हो, दैट इज व्हाट, आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो एक पॉज कंडीशन में चली जाती है, दैट इज गोइंग अ पॉज कंडीशन. ठीक है ना? अब क्वेश्चन आता है दैट डिस्कस आस्क्ड बाय द किशन लाइफ स्पैन बेसिकली हाउ योर एक्टिविटी विल बी वर्क. जैसे एक ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होती है, अ चाइल्ड born, child age, teen age, young age, old age and death. That is your entire life cycle. Okay? वैसे ही सिमिलरली आपकी एक्टिविटीज की भी ये लाइफ साइकिल्स होती हैं. FD also have a same kind of life cycle. So that we can manage with the help of callback methods. तो हम callback methods की हेल्प से क्या कर सकते हैं? We can manage it. Okay, that we can manage with the help of this method. So that we can see on later on when we are working on the concept of activity, then we can discuss it. Now, so what we have to discuss more? So for that purpose, we have a concept of a next, and that is called the services. उसे हम क्या बोलते हैं? That is called the services. That is what? A services. तो ध्यान रखना यहाँ पे services के बारे में. देखो, services is what? A services perform long running operation in the background. ये जो हमारी services होती हैं क्या होती हैं? Services perform long running operation in the background. Does not contain a user interface, means we cannot see the any view, यानी services का कोई भी view नहीं होगा. That's why we are saying and does not contain a user interface. Third point, used for things like network operation, playing music, etc. यानी अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? We can use the concept of services. Then we have also concept is run independently of the component that creates it. यानी जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती हैं. Got it? इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं.
And now next thing is can be bound by the other application component if allowed. अब क्वेश्चन आता है, देखो अब एक पॉइंट जो ध्यान रखना, आपकी जो बैटरी कंजम्पशन होता है ना, इवन योर फोन इज नॉट यूजिंग, दैट इज द ओनली रीजन, because there's a lot of services running in your phone, lot of services is running in your phone, and that's why you better will be consumed. आपकी बैटरी इसलिए ज्यादा कंज्यूम होती है because these services are executed in background. अगर आप इंटरनेट बंद कर देते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट माइंड फर्स्ट, if you close the internet, what happens, lot of application lot of services automatically bind on the internet. So when the internet is not there, they will be stop working, and that's why you can see your battery will become a longer life. आपकी बैटरी क्या होती है, they can get a long life, because when the no service is working, when no service is working, obviously you can get a lot battery, long battery life. अब क्वेश्चन आता है कि what is the purpose of this? So this was simple. The purpose is if you want to form any kind of background process, we can use what? We can use the concept of services. Okay, so आपकी services का भी कोई व्यू नहीं होता है, that's why we can move on a next concept. Content provider. Now we have another thing that is known as the concept of content providers. The first important thing is that अगर आपको application के बीच में data share करना है, if you want to share the data across the application, we have to use the concept of content provider. So now use to store and retrieve data and make it accessible to all applications. Use to store and retrieve data and make it accessible to all applications. That time we can use the concept of content providers. Are the only way to share the data across applications. This is the only way we can share the data with another application. Third point, expose a public URI. URI stands for Uniform Resource Identifier. That means expose a public URI that uniquely identifies its data set. Data is exported as a simple table on a database model. And the last point, Android contains many providers think like contact, media, and etc. तो देखो एक सिंपल सा वर्ड समझना, कि जो हमारे पास कॉन्टैक्ट एक एप्लीकेशन होती है, उससे सब कोई एक्सेस करता है, व्हाट्सएप एक्सेस करता है, फेसबुक एक्सेस करता है, एंड एवरीवन इज एक्सेसिंग. And when you see that they ask the permissions also, they want to access this contact application. तो contact जो है वो आपको एक concept provide करता है, that is known as the content provider. उसी से के हेल्प से हम क्या बोलते हैं, content provider. और when you can get the content provider, then you can access that thing very easily. हम उसका यूज करके चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, get कर सकते हैं. And that's why you can say is the important thing. Okay. Got it? So content provider will be used for sharing the data across the application. Now the next thing. A broadcast receiver. A broadcast receiver. A component that responds to system-wide broadcast announcement. That is the concept is broadcast receiver. Example include when the screen turn off, the battery is low, etc. यानी जब भी आपको ये मैसेज पॉपअप करते हैं, that is what? That is also broadcasting. You can say system related अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है, उसे हम बोलते हैं broadcasting. If you get any kind of notification regarding the system, that is known as the concept is broadcasting. Application can also initiate their own broadcast. Broadcast receiver contain no user interface.
मैंने अभी कुछ देर पहले थोड़ी सी कुछ बातें बोली हैं, सो काइंडली फॉलो दैट रूल्स देयर. When I will ask, then you all have to tell something. Otherwise, there's a no message. Okay? I can ask the query, then you can give the answer. Otherwise, just focus on the concept that we are discussing there. Now, broadcast receiver contain no user interface. Again, the second point that is need to be remembered कि जब भी हम बात करते हैं इंटरफेस की या एनी यूजर इंटरफेस, तो देयर इज ओनली वन इंटरफेस. यानी जब हम एक्टिविटी बनाएंगे तभी हमारे पास यूजर इंटरफेस होगा, अदरवाइज वी हैव नो एनी इंटरफेस. यानी हमें सिर्फ इंटरफेस किस कॉन्सेप्ट में मिलता है, वी कैन ओनली गेट व्हेन वी आर क्रिएटिंग द एक्टिविटी. अदरवाइज broadcast receiver we have no interface, services we have a no interface, as well as content provider we have a no interface. हमें इंटरफेस कहीं नहीं मिलेगा, यूजर इंटरफेस. वाई? क्योंकि इनका कोई खुद का इंटरफेस होता ही नहीं है. दैट्स नाउ दे कैन क्रिएट स्टेटस बार नोटिफिकेशन टू अलर्ट द यूजर. आप एक सिंपल सा एग्जांपल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का आप ऐसे समझ सकते हो, जो आप एक ऐप यूज करते हो आप, ट्रू कॉलर. ट्रू कॉलर इज अ प्योरली एग्जांपल ऑफ अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर. यानी जो ट्रू कॉलर होता है दैट इज वर्क ऑन अ विच कॉन्सेप्ट, on the concept of broadcast receivers. Clear? यानी जो हमारा ट्रू कॉलर एक ऐप होता है वो किस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे. दे आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर. एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा व्हेन यू आर गेटिंग अ कॉल, व्हेन यू आर गेटिंग अ कॉल, उसकी एक सर्विस एग्जीक्यूट होती है, यानी इसका एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर एग्जीक्यूट होता है और आपको चीजें एग्जीक्यूट करके दे देता है. आप एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज. ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट रिसीवर सर्विसेज में ये डिफरेंस होता है, सर्विसेज ऑलवेज इन एक्टिव मोड. Services is always in an active mode, but broadcast will be active when that kind of event is happening. यानी जो हमारी सर्विसेज होती है हमेशा एक्टिव मोड में होती है, बट जो हमारा ब्रॉडकास्ट यूज होता है क्या होता है, दैट मीन ओनली एक्टिव व्हेन दैट काइंड ऑफ इवेंट इज हैपनिंग. जैसे कॉल आया तो कॉल से रिलेटेड जितने भी आपने इवेंट्स लगाए होंगे ब्रॉडकास्ट यूज, दे विल बी स्टार्ट द वर्किंग. So that point we can understand there, a broadcast receiver. So all four components clear for everyone? Yes or no? अब इन चारों कंपोनेंट में जिसकी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकता है, एंड देन वी कैन मूव ऑन अहेड. उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे. नो क्वेरीज एवरीवन? Okay. So we can discuss now more on. Now we have a new file concept जिसे हम बोलते हैं Android manifest file. So now Android manifest.xml file it its root directory. हमने इसे देखा वो कहाँ होता है, always present in a root directory. So now present information about the application to Android system. तो कोई चीज ध्यान रखना, ये वो फाइल होती है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने टोटल कितने एक्टिविटीज बनाई हैं, हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट यूर देयर आर देयर, हाउ मेनी कंटेंट प्रोवाइडर्स आर देयर, एंड हाउ मेनी सर्विसेज आर देयर. यानी अगर आपको इनमें से कोई भी वर्क करना है तो उन सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट विल बी inside the Android manifest.xml.
इवेंचुअली हमें यहीं पे बताना होता है ऑल द परमिशंस। हमें ये भी बताना होता है क्या होता है कि अगर आपको जो जो भी परमिशन देनी होगी हमें कहाँ मेंशन करना होता है, इनसाइड दिस। ठीक है ना, जितनी भी परमिशन देनी है वो भी हम कहाँ देते हैं, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर देते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, declare the permission required to run the application. Now we can move for this one, the building process. See there, everyone can see this design, then I can tell you. शुभम, आपने एक और कॉन्सेप्ट देखा होगा, आप ओटीपी रीडिंग देखा है आपने, ऑटो ओटीपी रीडिंग? वो भी आपका एग्जांपल ब्रॉडकास्ट सीवर एंड सर्विसेज का है। ठीक है ना, तो देखो बेसिकली होता क्या समझना, हम एप्लीकेशन सोर्स कोड लिखते हैं जो जावा इंटरफेसेस के थ्रू होता है और वो AIDL फाइल के थ्रू मिलता है हमें। नाउ एप्लीकेशन सोर्स कोड, देन वी हैव r.java, और एप्लीकेशन रिसोर्सेज जिसे हम बोलते हैं दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर लेआउट, योर इमेज, योर एनी अदर थिंग्स, मीन्स कुछ भी होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ जाती है, यहीं पे आ जाती है। Got it? Next, that is go to the AAPT. AAPT, that is stand for, एक चीज ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कहीं पे। AAPT is basically stand for that Android Asset Packaging Tool. AAPT stand for the Android Asset Packaging Tool. AAPT stand for the Android Asset Packaging Tool. For that purpose, we can use the concept of AAPT. Now, next thing, अब AAPT can bind your entire package. समझना है पे, वो compiled resource को generate करेगा. Okay, and when your Java file will be there, it will compile that in a class file, and then class file will be converted in form of a text file, जिसे हम बोलते हैं one delve executable को call किया जाएगा. The third party library and dot class file, and now that become a dot text file. So text file, कंपाइल्ड रिसोर्सेज, इन सबको मिला और अदर रिसोर्सेज, इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, वी कैन गेट द एपीके, जैसे हम बोलते हैं एपीके बिल्डर, दैट वी कैन से एपीके बिल्डर. That we can say that is known as the concept of APK build. And after that we can get the Android package, that is stand for the .apk. But अगर आपको उसे क्या करना है, अपलोड करना है कहाँ पे, ऑन प्ले स्टोर, तो उसके लिए हमें उसे जार साइनर लगाना होता है. क्या करना होता है, उसे जार साइनर करना होता है. डिबग और रिलीज की स्टोर, हमें एक की स्टोर बताना होता है कि हम उसे डिबग करके उसे रन करना चाहते हैं. So that's why we have to do the work is jar signing. And after the getting the signed JPK, we need to zipline for release mode. जिपलाइन का मतलब होता है अब हम उसमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट किसने बनाया है, उसका वर्क क्या है, एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेंशन. सो दैट इज द बेसिकली मेंशन बाय द जिपलाइन एलाइन. ये हमारा क्या होता है, जिपलाइन जिपलाइन रिलीज मोड. तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. यानी दिस इज द एंड Android Asset Packaging Tool, that is stand for the AAPT. ठीक है ना, and there's another thing that is known as the ADB, that is Android Debug Bridge. ठीक है ना, ADB stand for the Android Debug Bridge, AAPT stand for the Android Asset Packaging Tool. Clear? So we have now this kind of things. अब इसके बिहाफ पे हमें आगे चलना है. ठीक है ना, so now we have to come back there. That's it. So now this is the things we can discuss already.
So now we have to start with the concept inside the Android Studio. यहाँ पे ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को मैनिफेस्ट फाइल दिखाता हूँ। Focus on the concept page now. Clearly see this file. Everyone, this is the root tag is always a manifest tag. जो हमारा root tag होता है कौन सा tag होता है? That tag is your manifest tag. Manifest is your root tag. Manifest is what here? It's your root tag. Manifest is your a root tag, and inside this tag you can find there's a one component that is the application tag. Which tag is there? Application tag. तो यहाँ पे आप एक वर्ड सुन सकते हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, if you remember. That's the encoding format. There's a written is that is the encoding format. जैसे आप एस्काई पढ़ते हो वैसे यूनिकोड सिस्टम होता है, जैसे ये आपके पास UTF-8 होता है, ठीक है ना। So that is just the encoding format, nothing more. That is encoding concept. Now we have a concept is what? That we can discuss all day. But what we have to discuss that is the concept of this. इस पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना है। How we can understand that? चलो उस चीज को हम समझने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। देखो अंडरस्टैंड क्या चीज कि आप कितनी भी एक्टिविटीज बनाओगे, सभी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए? दैट मस्ट कंटेन द इनसाइड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर कैसे वर्क किया था, अब मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, समझना यहाँ पे। बट उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो समझना है। ऑन क्रिएट, देन वी हैव फंक्शन इज ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। ये हमारी लाइफ साइकिल होती है और ये हमारी लाइफ साइकिल के फंक्शन है। किसी भी एक्टिविटी की ये लाइफ साइकिल के फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, देन ऑन पॉज, देन ऑन स्टॉप एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय। ओके, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होगी समझना, एंड दिस वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज ऑन रीस्टार्ट। अब पॉइंट समझना क्या है, देखो एक्टिविटी कभी भी स्टार्ट हो वो कुछ प्रोसेस ऐसे करती है, समझना।
समथिंग लाइक दिस, ध्यान रखना। बट ऑन रीस्टार्ट को कभी लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं मानते हैं, ध्यान रखना। यानी पूरी लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में ऑन कीड एंड ऑन डिस्टर्ब फंक्शन सिर्फ एक बार चलेगा, ध्यान रखना। विच फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वंस? ऑन कीड एंड ऑन डिस्टर्ब। यानी एक्टिविटी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार बनेगी और एक ही बार खत्म होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। टोटल कितने फंक्शंस होते हैं देयर इन अ एक्टिविटी लाइफ साइकिल? So just 6 फंक्शन, on create, on start, on resume, then we have on pause, then on stop and then on destroy. तो हमारा काम सिर्फ किस पे स्टार्ट होता है? We have to start with the concept of on create concept. We have to start with the concept is where? On create concept. यहीं से हमें concept को start करना है। Clear now? चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, सो वी कैन कम बैक देयर। राइट क्लिक न्यू। तो हम एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द क्लास, जावा क्लास, और उस क्लास का हमने नाम रख दिया फर्स्ट एक्टिविटी। देखो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी बेसिकली फॉर मैनुअल वे कि हाउ वी कैन क्रिएट द प्रोग्रामिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा क्लासेस। तो हम मैनुअल वे में सारी चीजें पहले करेंगे। So now I'm asking with all of you, अगर किसी का नाम सचिन रख दो, क्या सचिन तेंदुलकर हो जाएगा वो? नहीं। Then what we need to do the work. और उसे हम कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे जावा में पूछूं कि आपको किसी क्लास को उस टाइप का बनाना है तो क्या करना होगा? What are the things we have to do? हाँ, कोडिंग में कैसे करेंगे? कास्ट इट। मैंने कहा अगर किसी को सचिन जैसा बनाना है तो क्या करना होगा? What we have to do? क्या करेंगे? हमें एक्सटेंड करना होगा। किसे एक्सटेंड करना होगा? समझना, हमें उसकी वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी होंगी जो उसके अंदर खूबी थी। दैट वी हैव टू आल्सो डू दैट। तो जावा में ये काम हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। किस कीवर्ड से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। विच क्लास वी हैव टू इनहेरिट? वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी। सी देयर, we have to use the concept of activity android.app1. Which thing we have to inherit? Activity, that is android.app selected. Clear? Now this first activity become an activity type. The first activity now become an activity type. So what we have to do the work? Life cycle का first function कौन सा function होता है? एक्टिविटी लाइफ साइकिल का फर्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? द फर्स्ट फंक्शन इज ऑन क्रिएट। तो हमने से देखो, अब यहां पे ध्यान रखना है, कोड लिखना नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप कोड लिखने पे गए यू कैन फेस द प्रॉब्लम। वी हैव टू यूज द आईडी सजेशन। तो हमने लिखा ओ एन ऑन CRE। जैसे ही आपने लिखा यू कैन से यू कैन गेटिंग द ऑन क्रिएट फंक्शन विथ अ वन पैरामीटर। सी दैट
function लिख गया. That point is clear for everyone. Now what we have to do the work. समझना, हमने फंक्शन तो बना दिया बट हमें लेआउट भी तो चाहिए. We require the layout. How we can get that layout? Now see, we go to res folder. कहाँ जाएंगे? We can go to the res folder. Now you can see there's a written is layout. Inside this layout we can call here a right click new. Right click new and see that there's a written is layout resource file. अगर यहाँ से नहीं मिलेगा, go to the XML, then you can get here the layout XML file. So just click on that. Get everyone? और इस layout के अंदर हमने इसका नाम रख दिया first activity. First activity. And finish it. देखो समझना है, यहाँ पे आप जो डिजाइनिंग करते थे वो डिजाइनिंग देखो हमें यहां से मिल गई. देख, यही तो हम स्क्रीन पे देखते हैं. अभी यहाँ ग्रेडल सिंस हो रहा है तो थोड़ा वेट करना है. ऐसा नहीं कि वो चलता रहे और आप ट्राई करो उसे राइट करने की, तो यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑल्सो. That is not a problem, Kishan. Now, what I have to do? पहले focus कर लो सभी लोग. Firstly, everyone focus. Now, so what we have to do the work. देखो, for that purpose, see there's a concept is what we have to create something. तो उसके लिए हमें क्या करना है? We can go to the exam. देखो, यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, इन पे क्लिक करेंगे तो we can reach to the XML section. और यहाँ पे जो हमारा लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन है, वो डिफॉल्ट वर्टिकली है. हमें उसे कैसा चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए. और ये हॉरिजॉन्टल था, वी रिक्वायर द वर्टिकली बेसिकली. इसका मतलब होता है कि हम चाहते हैं, समझना यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हो यानी एक लाइन में एक एक चीजें आएंगी. अगर आप वर्टिकली रखते हो इसका मतलब अब एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन आएगा. तो दैट्स समथिंग लाइक दिस. यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कुछ ऐसे मिलेगा आपको. दिस इज समथिंग लाइक दिस कि आर्म क्रिएट होगा, फिर नॉन स्टार्ट होगा, फिर ऐसे समथिंग लाइक दिस. बट वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? वी कैन गेट द आउटपुट लाइक दिस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू द वर्क. हम यहाँ पे वापस आएंगे. फोकस किस कॉन्सेप्ट पे करना है अब वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर इज व्हाट वी कैन सी देयर there's a written as text. We can there's a written as text, so we can drag it there. A text you see there, text you, and that we can drag it there. देखो ये टॉप पे पहुंच गया. That is going on top. There's no issues. We can go to the XML section, and now there is a one point is there, and that we can say margin from top, और वो हमने कर दिया 100 dp. And then we can here say a text size. We can say 30 sp. That means 30 small pixels.
Then we have a text color. तो text color में आप hash code pass कर दो, anything A B C D E F. Now when you pass this hash code, you can get a rectangle bracket. Just click on that. You're getting your color chooser. You can pick anything from this. So this is your color side. Then we have also concentrated text alignment. So text alignment we can use at the center. Then we have a text style, and that we can say in form of bold type. And what the message you want to, so we can say my first activity. My first activity. So now this point, till this point, is everyone clear, everyone? आप समझना क्या है, we have to link. देखो ये लेआउट है, दिस इज योर लेआउट एंड दिस इज योर एक्टिविटी. हम चाहते हैं ये लेआउट इस एक्टिविटी का पार्ट बने. तो कैसे लिंक करते हैं, दैट वी कैन कम गो टू द फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा सीधे. तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, सीधे अब हमें उस एक्टिविटी को यहाँ लाना है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी कैन डू द वर्क इज सेट कंटेंट व्यू. सीधे सेट कंटेंट व्यू. We can call here the r.layout dot. तो लेआउट का नाम क्या था हमारा, फर्स्ट एक्टिविटी दैट. तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था और बताया था कि जावा में आपके पास एंड्रॉयड एक r.java फाइल होती है, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस. तो यहां देखो r इज योर आउटर मोस्ट क्लास, layout is your inner class, and that is a static type. And then we have a static variable that is what, a first activity. तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिंक कर ली, and you can see that now we have linked your layout with this activity class. यानी इस activity class के साथ हमने इसे लिंक कर लिया. That point is clear everyone? But अभी भी एक प्रॉब्लम है. We have a one problem. इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन नॉट हैव टू एंड्रॉयड manifest.xml. यानी इसकी इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट के पास नहीं है. देन वी हैव टू ऐड इट. कैसे ऐड करेंगे, सीधे वी कैन गो टू देयर, और यहाँ पे मैं काम क्या कर रहा हूँ, दिस एक्टिविटी टैग हमें कुछ नहीं करना है. वी हैव टू ऐड अनदर एक्टिविटी टैग. तो देखो इसमें नाम पूछ रहा है, कौन सी एक्टिविटी हमें ऐड करनी है. मेन की ऑलरेडी एंट्री है, तो वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट एक्टिविटी. Now, अब हम चाहते हैं कि when we click on this activity, that will be execute also. So that's why we have to use the concept of launcher activity. हमें क्या बनाना होगा, we have to create the launcher activity also. So for that purpose, we have to use the concept of intent filter. We have to use the concept of intent filter. Intent filter is also a concept of one kind of IPC. ये जो हमारा इंटेंट फिल्टर होता है वो भी क्या होता है, अ काइंड ऑफ आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज डन बाय द इंटेंट फिल्टर आल्सो. सो नाउ वी हैव डन दिस, एंड इनसाइड दिस वी हैव टू टेल टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज एक्शन. So inside the action we have to tell the name, and inside the name we have to tell that it is a launcher type. Sorry, it is a main type. The android.intent.action.main, that we have to use, and then we can close this tag. Android.intent.action.main. Okay, and then we have to tell me category. हमने इसकी category बताई, और category में हम बताते हैं इसका name, that is a launcher type. That's it. अगर आप इसे launcher नहीं बना सकते आप चाहते हो, तो you can make it as the default type also.
If you not want to make it as a launcher, then you can make it as a default type. So the task is now done. See there. If you click on this, right click there and just do the one is done first activity. See there. Yes, Tushar, that is there will be also automatic, but that we can discuss in next activity. That we can discuss in next activity. Don't worry. Now see that when the things is executed. Now see there. The first activity is coming now. Why it will become as a blue colored? We have to develop everything in a white color. So that is the layout. This is your layout. This is just a blueprint. It's showing the blueprint in back. This is not the layout. Layout is this. It's just a blueprint copy. It's just a blueprint copy of that layout. Got it, Mrityunjay? Up now, what we have now. So ये सभी से बन जाएगा, yes or no? ठीक है. So now we can discuss second concept and then you start the working. Okay, we can discuss the second concept, means how we can manage the event. ठीक है ना. तो उसके लिए हम काम क्या करने वाले हैं? सीधे हम क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट द टू बटन्स. हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे सीधे. हम क्या बनाएंगे, वी कैन हैव वन टेक्स्ट व्यू. हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे और यहाँ कोई मैसेज रखेंगे, वेलकम इन 2020 व्हाट इट. और फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक बटन रखेंगे. ठीक है ना. व्हाट वी कैन डू देयर इज वी कैन पुट हियर वन मोर बटन. हम एक बटन रखेंगे. तो यहाँ पे हम रख देंगे हाइड एंड. तो जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये कंटेंट हाइड हो जाए, जब दोबारा क्लिक करें तो वापस कंटेंट क्या जाए, आ जाए. हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, सपोज दैट. तो हम यही काम इंप्लीमेंट कर लेते हैं किसके अंदर, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर ही. समझना, that concept we can manage with the help of the same activity that we are working. In which activity? First
एक्टिविटी। कैसे करेंगे, सीधे अब देखो वापस आ जाएंगे यहीं पे। देखो फर्स्ट एक्टिविटी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वांट इफ वी क्लिक ऑन द बटन, हमारे पास एक बटन है, बटन को हमने ड्रैग कर लिया यहाँ पे सीधे, वी कैन ड्रैग दिस बटन, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया, यहाँ पे शो मैसेज, यानी हमें मैसेज को शो करना है। गॉट इट। एज वेल एज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने इनविजिबल, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है विजिबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी है वो क्या होती है, विजिबल होता है, वैसे क्या कर देंगे इनविजिबल। नाउ सी द मैसेज इज नॉट अवेलेबल, मैसेज इज नॉट अवेलेबल, सो व्हाट वी हैव टू डू द वर्क। अब समझना यहाँ पे देखो क्या पॉइंट ध्यान रखना, समझना। देखो किसी भी इवेंट को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज इवेंट, ठीक है ना, इवेंट सोर्स एंड इवेंट लिसनर। That means if you want to do any kind of work, there's a three things: event, event source and event listener. और अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है आपके पास, देन आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी, उसके पीछे एक रीजन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे ना। सो मैसेज एंड दिस, तो नाउ अब करना क्या, देखो सबसे पहली चीज इसकी इन आईडी क्या दी हुई है, टेक्स्ट व्यू, और इस बटन की आईडी क्या है, दैट इज बटन। दैट इज अ टू इंपॉर्टेंट वी नीड टू रिमेंबर। और इन सभी को हम बोलते हैं, जितनी भी चीज हमने बनाई है इन्हें हम बोलते हैं विजेट्स, यानी इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट यार, दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर व्यू, इसी को हम बोलते हैं व्यू। क्या कहलाता है ये, व्यू। आप इसे व्यू भी बोल सकते हो, आर विजेट। व्हाट इट, तो ये व्यू भी है और विजेट भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे मिलते हैं विजेट पैकेज के अंदर, तो ये सारे व्यू हैं। और जो व्यू होता है, व्यू की सुपर क्लास होती, सभी विजेट की सुपर क्लास कौन सी क्लास होती है, व्यू ग्रुप क्लास। सुपर क्लास इज व्हाट, कि जितनी भी हमारे पास व्यूज होते हैं वो सारे क्या है, हमारे व्यू ग्रुप के एग्जांपल्स होते हैं। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्यू ग्रुप क्लास, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्यू ग्रुप क्लास। अब एक क्वेश्चन आता है, सभी लोग देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्या फाइंड करना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस पूरे लेआउट के अंदर हमने टोटल कितने व्यू डिक्लेयर किए हैं, या मींस हमने कितने व्यू बनाए हैं, ऑल ऑफ यू, इस पूरे लेआउट के अंदर हमने टोटल कितने व्यू बनाए हैं,
2। कौन कौन से बनाए हैं? टेक्स्ट व्यू एंड बटन टाइप। ध्यान रखना, हमने 2 व्यू बनाए हैं, टेक्स्ट व्यू एंड बटन टाइप। नाउ वी नीड टू फॉलो द रूल्स। यहां पे वापस आ जाएंगे फर्स्ट एक्टिविटी में। तो सबसे पहली चीज जो हमने बनाई है वो क्या बनाई है? द फर्स्ट थिंग वी हैव क्रिएटेड है व्हाट? अ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू, और हमने इसका नाम दे दिया टीवी। And second thing what we have to create it is a button V. ठीक है ना? तो टेक्स्ट व्यू इज अ क्लास एंड बटन इज आल्सो अ क्लास, यानी यहाँ पर 2 क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं और उनके बिहाफ पे हमें कोई भी वर्किंग यहाँ पे करनी है। उसके बिहाफ पे हमें यहाँ कोई भी वर्किंग परफॉर्म करनी है। नाउ अब क्वेश्चन आता है हम इस चीज को कैसे मैनेज करें, हाउ वी कैन मैनेज द थिंग्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है? 2 चीजें हमें यहाँ पे फोकस करनी है और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अब यहाँ पे वैसे समझ सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप उसकी स्टूडेंट क्या पता हो जिसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो? यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। देखो कॉलेज में उसका रोल नंबर पता होना चाहिए, आई एम राइट? कॉलेज में हमें क्या पता होना चाहिए? वी मस्ट नीड टू अवेयर अबाउट इट्स रोल नंबर। जब हम एंड्रॉयड में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें उसकी आईडी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आईडी, जो हम लोगों ने एट द स्टार्टिंग अभी बताया था। तो बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। सीधे बी फाइंड व्यू बाय आईडी। तो मैंने आपसे एक चीज कही थी, वी हैव अ वन क्लास दैट इज आर डॉट जावा। सीधे नॉट डॉट, हमें क्या चाहिए? हमें अब लेआउट, देखो ये सारे उसके इनर क्लासेस हैं, तो हमें क्या चाहिए? आईडी चाहिए। और आईडी के बाद उसमें से कौन सी आईडी चाहिए? तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था बटन, हमें बटन की इंफॉर्मेशन। गॉट इट? हमें बटन मिल गया। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? टीवी इक्वल टू, तो अगेन फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट अंडर द कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू। देखो हमने दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेट कर दिया। करना क्या है उसके लिए? अब देखो अगर हमें बटन पे काम करना है तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट वन इंटरफेस। हमें क्या करना है? एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑन क्लिक लिस्टनर। You can do the work is on click listener. Implement method. अभी वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? I can remove this again. Z either. Z also. Implement करना है, किसे करना है? O या on टाइप करना। Now you can see there is a 2 on click listener. आपको यहाँ 2 on click listener दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा android.view.view और एक दिख रहा होगा android.content.dialog interface. We have to use the android.view.view1. Clear? Now you can get an error. तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बल्ब दिखता है, just click on that. You can get the implement methods.
यहाँ कहता है मेक फर्स्ट एक्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, नहीं, हमें करना है इम्प्लीमेंट मेथड, क्लिक ऑन दैट। जैसे ही क्लिक करोगे इट इज सेइंग दैट वी हैव टू ओवरराइड वन फंक्शन, दैट फंक्शन नेम इज ऑन क्लिक। Now we are getting this output. Okay, so when you click on the button, समझना यहाँ पे, now when you click on the button we can reach to this section। और जब इस सेक्शन में आएंगे तो हमें काम क्या करना है, तो यहाँ पे दो चीजें करनी है। फर्स्टली पहले चेक करेंगे क्या इफ बी डॉट गेट टेक्स्ट, बटन पे टेक्स्ट क्या है, डॉट इक्वल्स, सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहां अगर मैसेज है सो मैसेज, अगर ये है तो हम क्या कर देंगे टीवी डॉट सेट विजिबिलिटी, और यहां पे हम कर देंगे विजिबल, और यहां पे हम बटन की वैल्यू क्या कर देंगे बी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहां क्या सीक्वेंस बता देंगे हाइड मैसेज। एंड एल सेक्शन में हमें क्या काम करना है, इनसाइड द एल सेक्शन वी कैन डू द वर्क इज सिमिलरली दिस, कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे वी कैन डू द वर्क इज, तो यहाँ हाइड के बाद क्या हो जाएगा so, और यहाँ क्या हो जाएगा इन दिस। Okay, now if you run this application, see there, if I run this, देखो आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, यहाँ पे हमने इसे रन करा, देयर इज नो इश्यूज। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं सी देयर नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तो क्वेश्चन आता है इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए अब एक पॉइंट समझना, यहाँ तो बेसिकली सी देयर कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ पे करने हैं। देखो तो बेसिक
लिसनर देयर, हमें यहाँ क्या बताना होगा, लिसनर बताना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी कैन राइट इज बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, दिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नाउ इफ यू रन दिस अगेन, सी देयर व्हाट हैपन। तो मैसेज सीधे हाइड हो गया, सो मैसेज पे क्लिक किया तो हाइड मैसेज आएगा। नाउ यू हैव टू कॉल दिस अगेन, दिस, तो समथिंग लाइक दिस, दैट इज द कॉन्सेप्ट इज सो मैसेज इज हिडन नाउ, सो मैसेज, तो मैसेज कम नाउ, हाइड मैसेज, so this is basically concept is what, a hide and seek kind of things। तो यानी हम मैनेज कर रहे हैं क्या चीज, इवेंट्स, और इवेंट्स तब तक मैनेज नहीं होता जब तक उसे लिसनर्स पता ना हो। तो वी आर डूइंग दिस वन। नाउ एनीवन हैव क्वेरीज? यस, एनीवन हैव क्वेरीज इन दिस सेक्शन? So now I wish you all can start the concept now and implement. देखो बेसिकली व्हाट द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ठीक है ना। देखो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, व्हेन यू डॉक्टर डूइंग ए वन ऑपरेशन, भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आप ह्यूमन को क्या देता है, इट्स पुट द एनेस्थीसिया, क्यों देता है, सो दैट इट मेक इट्स बॉडी सेंसलेस, यानी वो कैसी हो जाए, सेंसलेस हो जाए। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, इट विल फील द टच इवेंट एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो सिमिलरली अगर बटन है तो बटन को अगर हम सेंसिटिव नहीं बनाएंगे, यानी इफ एनीवन क्लिक ऑन दैट एंड इट विल बी रिएक्ट, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो अब क्वेश्चन था कि हमने उस समय क्या नहीं बताया था, नॉट टेल द बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी हम बटन पे क्लिक करें तो किस लिसनर को कॉल करना है हमें नहीं पता था, एंड दैट से कोई इवेंट कर भी, हम बटन पे कोई इवेंट कर भी रहे थे तो इवेंट हो रहा था, समझना, बट उसका कोई लिसनर नहीं था, उसका कोई क्या नहीं था, देयर इज नो लिसनर। और अगर हमारे पास लिसनर नहीं होगा तो हम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। देखो सिंपली सा वर्ड समझना, एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज हो, ठीक है ना, बट उसे देखने कोई ना जाए, तो क्या वो मूवी सक्सेसफुल मानी जाएगी? जस्ट टेल मी ऑल ऑफ यू, क्यों नहीं मानी जाएगी, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि कोई भी चीज तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसका लिसनर वहां पे एक्टिव हो। अगर लिसनर नहीं होगा तो वी कैन नॉट से कि हमें जो काम कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है ना। तो देखो हम क्यों कहते हैं, देखो अगर लिसनर होगा तभी वो चीज सो सक्सेसफुल है, नो लिसनर, ठीक है ना। आज जैसे आप कॉलेज में कोई इवेंट करते हो, समझना, वो भी डिपेंड करता है आपके लिसनर्स पे, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर लिसनर्स। तो व्हाट यू कैन फील, आप टेक्निकल इवेंट करते हो, देयर आर लेस पीपल, व्हेन यू हैव अनदर काइंड ऑफ इवेंट्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लिसनर्स हैं तो जितना ज्यादा लिसनर्स उतना अच्छा आपका इवेंट प्लेसमेंट। तो यहाँ बिना लिसनर के हम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। And if you want to tell the listener, we can just use the concept of set on click listener, especially for the button. Button के लिए हम क्या यूज करते हैं, we can use the concept of b dot set on click listener.
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब क्वेश्चन आया होगा दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। Why we are telling the current object? Because we have implemented the on click listener in this class, and that's why we calling the this is there. So now I hope say this point is clear for everyone. Now that is clear for everyone. Okay. So now I hope so you all can make this application right now. And if you can face any problem, then I will know. I will be there. Okay. Everyone can do this work. Okay, everyone. Start the working. कोई ऐसा जिसका सिस्टम अभी तक कॉन्फ़िगर ना हुआ हो विद एंड्रॉइड स्टूडियो? एनीवन? Anyone whose system is not configured yet? So have you installed it or not? आप लोगों ने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है? Then what is problem is showing? शायद self manager is not working. So you have installed the Android, sorry, you all have installed the AnyDesk software? Yes or no? मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, द रिमेनिंग पीपल जिनका एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है वो अपना काम करें. दैट मीन द टास्क आई हैव गिवन. खुशबू, गिव मी योर एनी डेस्क आईडी. Have you installed the AnyDesk software in your system? So give me your AnyDesk ID.
What test on button? Uh, Salim, there's a what the information I can tell. Just download the Android Studio and installed it, and then just create a one project. The things is done. If there's a no error, that means that program is done now. If there's an error, that means the installation is not completed. Yes, Kuzbu, what is an issue? Kishan, what the question you are asking? Visibility you can get from this tag. See there. When you click on the designing, there's an attribute is written. See there. There's an attribute. The visibility, I have not selected a visible. We can make it invisible from this place. Now the thing is invisible. Okay. So now if you run this, you can see that nothing is going to be show you. Show message, that is come. Hide message, that is gone now. Okay, just wait. Yes, Hello. speak. Yes. गुड मॉर्निंग सर। Yes, Kishan, say. सर हमको सर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बटन पे हम कैसे आप चेंज कर दे रहे हैं, वहाँ पे शो बटन और शो मैसेज और हाइड मैसेज आ रहा था। एक्टिविटी एक्सएमएल एक्टिविटी मेन डॉट समझ गया। एक्सएमएल में क्या चेंज कर रहे हैं? हम वहां कुछ नहीं चेंज करना। दैट थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ डायनेमिकली। देखो जब आपने बटन पे क्लिक किया, ठीक है ना, यस सर। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? सीधे हम चेक कर रहे हैं कि बी में लिखा क्या है। बी डॉट गेट टेक्स्ट, हम पहले टेक्स्ट गेट कर रहे हैं और फिर से कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पे इक्वल्स इग्नोर केस, यानी इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब केस सेंसिटिविटी हटा दिया। अगर वहां पे सो मैसेज लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सो मैसेज, तो हमें अपने जो टेक्स्ट व्यू की उसकी विजिबिलिटी ऑन कर देनी है। तो यहाँ देखो टीवी डॉट सेट विजिबिलिटी हमने क्या कर दिया? उसे व्यू डॉट विजिबल, हमने उसे विजिबल कर दिया यानी ऑन कर दिया। और फिर हमने बटन पे क्या मैसेज डाल दिया? बी डॉट सेट टेक्स्ट हाइड मैसेज, यानी जहां पहले सो मैसेज दिख रहा था वहां हमें क्या दिखेगा? हाइड मैसेज दिखेगा। फिर दूसरी कंडीशन में कहा अगर ये नहीं होगा तो हमें ये काम करना है। इसका मतलब हमें वापस अपनी चीजों को क्या कर देना है? इनविजिबल कर देना है। और जो टेक्स्ट है सेट टेक्स्ट उसे क्या कर देना है? सो मैसेज कर देना है। तो देखो जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, देखो ऐसे ही तो आता है। तो क्या लिखा है? सो मैसेज। जब आप इसमें क्लिक करोगे तो एक इवेंट होगा। इवेंट होगा तो कहां जाएगा? ऑन क्लिक फंक्शन पे जाएगा, तो वो चेक करेगा बी डॉट गेट टेक्स्ट। तो मैसेज यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो मैसेज। सो मैसेज लिखा हुआ है। और सो मैसेज क्या इसके इक्वल है? अगर हाँ तो जैसे ही आपने क्लिक किया देखो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है ना। अब हमारी विजिबिलिटी आ गई और सेट टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई? हाइड मैसेज हो गया। यस सर। अब जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? वापस इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अब तो वहां मैसेज क्या लिखा हुआ था? आपके जो बटन था उसका टेक्स्ट क्या था? हाइड मैसेज था, तो नहीं था। इसलिए इफ नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा? एल्स चलेगा। तो एल्स में देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ? टीवी डॉट सेट विजिबिलिटी। अब हमें उसे इनविजिबल कर देना है और जो टेक्स्ट है उसे क्या कर देना है? सो मैसेज, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्लियर है?
ओके सर, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में दिखाइएगा सर उसका कोड। अरे एक्टिविटी डॉट मेन से कोई मतलब ही नहीं है ना। सर तो फर्स्ट जब एक्टिविटी यहाँ डॉट पर हम, दिस हाँ यही कौन सर। से इसका, सर ये यहाँ पे जब डिजाइन सेक्शन। बट हाँ डिजाइन सेक्शन है सर। इसमें जब कोडिंग किया है ना, जो बटन का, जो बटन पे क्लिक करने के बाद आया है जैसे, तो वहाँ पे बटन में टेक्स्ट में कुछ भी नहीं डालेंगे। ये डाल तो दिया, सो मैसेज इज रिटर्न, बट उसने हमने हाइड कर रखा है ना। हमें ओके सो सर। मैसेज लिख नहीं रखा है, सो मैसेज क्या लिखा हुआ है। ओके सर, हो गया सर, थैंक यू ठीक सर। है, या ओके। नाउ एनी अदर क्वेरीज, एनीवन? Any other queries? Khushbu, just give me your AnyDesk ID. Sonu, accept the request, then I am able to access your system. Sonu, accept the request. Who's doing the next? Do the
Sonu, where are you? What error you are getting, Vinamrita? Khushbu, you install the team any devs or not yet? So give me your Android any desk ID, then I am able to see that problem. No target device. So now see there, अगर आपको target device नहीं मिल रही है, then you Vinamta, you not connected your phone with USB. So you allow the concept of and debugging, USB debugging. So your phone is not detected yet. कितने लोगों का फोन आपका डिबगिंग पे अपने आप आ रहा है? दैट इज कमिंग विद द डिवाइसेस. हाउ मेनी पीपल? कितने लोगों को अपनी डिवाइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है? समथिंग लाइक दिस. देखो, दिस इज द फर्स्ट डे. सो अब थोड़ा सा स्टार्ट होगा एंड थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे. वी कैन गो वेरी स्लो इन फर्स्ट फ्यू डेज, means 1 2 or 3 days. The reason behind it is because we have to work on the concept of Android, and we have to understand how this Android Studios is working. और यहाँ मुझे अब रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है फ्रॉम. आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन. कितने लोगों को अपने फोन का डेबगिंग ऑन नहीं हुआ है अभी तक? यानी डेवलपर ऑप्शन कितने ने ऑन नहीं किया है? टेल मी. Are you using the original work key? Yes, means you are using the original cable.
I am getting very less response. कितने लोगों को अपने फोन में डिवाइस की इंफॉर्मेशन दिख रही है, लाइक दे सी देयर? एवरीवन? This for everyone. I'm asking this question with everyone. So give me your AnyDesk ID, Vinamrata. See there. My phone is detecting like this. आपको यहाँ मेरा फोन दिख रहा होगा राइट नाउ. तो अगर मैं अपने फोन पे भी रन एप्लीकेशन करना चाहूँ, जस्ट आई हैव टू क्लिक दिस. Vinamrata, give your Salim, you have downloaded the Android Studio, yes or no? Okay. So देखो, if you all are from the same class, same college, maybe some are from the same college. So अगर आप near about places, why in a yesterday classes already I told you everyone must install the AnyDesk software. Everyone must install the AnyDesk software. Then why you have not installed? तो मेरी कुछ बातें समझना, ठीक है ना? आई थिंक यहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल्स होंगे मे बी, ठीक है ना? तो डू वन थिंग, अगर आप एक दूसरे को जानते भी हो, ठीक है ना, इफ यू आर फ्रॉम द सेम क्लास, तो हेल्प टू इंस्टॉल द एंड्रॉइड स्टूडियो टू ईच वन डिवाइसेस. यानी एक दूसरे के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको आप देख के इंस्टॉलेशन कर लो, ठीक है ना? अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती है देन आई कैन सॉल्व इट, बट उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, ऑल ऑफ यू. आई एम अगेन सेइंग दैट सब लोगों को एक काम करना है, सभी के सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए. पहला सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड स्टूडियो और दूसरा कॉन्सेप्ट है एनी डेस्क सॉफ्टवेयर. क्लियर एवरीवन?
आज सब लोगों को कर लेना है, ठीक है ना, ताकि कल हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकें। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हम लोग अगर स्टार्टिंग में ही 2 दिन में नहीं इंस्टॉल करेंगे, देन वी कैन फेस अ प्रॉब्लम लेटर ऑन आल्सो, हमें प्रॉब्लम्स आगे भी आती रहेंगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हमें आज कल परसों 2-3 दिनों में हमें इसे क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर एवरीवन? आज के टॉपिक्स में बाकी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेरी है किसी की भी? नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों को एक काम करना है, देखो अब योर एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। अब आपका एफर्ट यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, ध्यान रखना। क्यों एफर्ट मैटर करेगा? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है, बिकॉज यू हैव टू डू द कोडिंग, और अगर आपको कोडिंग करनी है तो एफर्ट भी किसका होगा? आप ही का होगा। तो इसलिए हमें अब फोकस रखना है अपने एफर्ट्स पे काम करने के लिए। किस पे काम करने के लिए? वी हैव टू फोकस ऑन इट्स योर ओन एफर्ट्स। ठीक है ना? तो आई होप सो यू कैन डू योर एफर्ट्स आल्सो देयर, ताकि हम लोग कल से वी कैन स्टार्ट द थिंग्स अ बेटर वे। यानी कोई जो चीजें होती हैं, जैसे अभी बहुत से लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मृत्युंजय आपको? देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं बाकी चीजें कल देखूंगा राइट नाउ, ओके, बिकॉज आई हैव टू सेशन अगेन। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना, if you are getting a this id, see there something like this, all of you, सबको दिख रहा है ना? तो ये जो आईडी होगी, आपको ये आईडी देनी होगी मेरे को। निधि, मृत्युंजय, दैट आई कैन सी ऑन टुमारो सेशन, ठीक है ना? तो कल मैं जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं एट द बिगनिंग आई कैन रिजॉल्व इट, ओके। सो आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है 2 चीजें, एनीडेस्क, और जिन लोगों ने अभी भी इंस्टॉल नहीं किया एंड्रॉइड स्टूडियो, दैट यू कैन इंस्टॉल इट। क्लियर एवरीवन? ओके, so we can meet on tomorrow at the same time, but now from now onwards your hard work need to be start, hard work as well as smart work both, okay? So goodbye all of you, see you tomorrow at the same time.